We've got some breaking news coming in. After 16 people were rescued from a tunnel in Uttarakhand's Tapovan area following the glacial flash flood, Home Minister Amit Shah has praised the ITBP rescue team that put their lives on the line to rescue 16 people, with work continuing to rescue more people who remain unaccounted for after the disaster that swept through the Chamoli area starting 10:40 this morning. So Home Minister Amit Shah has praised the dangerous and risky work being done by the ITBP and Disaster Response Force teams. Gaurav Sawant is on the ground in Uttarakhand tracking the developments there. Gaurav, very, very brave work being done by all of the disaster response forces right now after this terrifying disaster, with more than 100 people still unaccounted for, probably a number that will increase. Home Minister stepping in, praising the brave efforts under grave risk by all these personnel to save the lives of others. It indeed is, Shiv. 16 people have now been rescued from this tunnel, and removal of debris and rescuing people in extremely difficult situation is what these people have done, especially when the terrain remains fragile at this point of time. There were flash floods, a lot of the roads and bridges have been washed away, and yet NDRF teams were able to trek there, get there and rescue people. Shiv, I've also now been told that Chinook helicopters of the Indian Air Force are on standby at Chandigarh. There are helicopters that are on standby at Sarsawa, and they would be launched as quickly as disaster rescue teams want, because some heavy cutting equipment would be required, and it's only a heavy lift helicopter that would be able to carry this equipment as quickly as possible to be able to speed up those procedures. And the Chinook, as you well know, is capable of carrying a large quantity, and weight, and underslung it can carry even bulldozers and road rollers should there be a requirement, or other cutting equipment should there be a requirement. So all of that is currently being worked out even as we speak, Shiv. Gaurav, thanks very much for that update. Praise coming in for the rescue personnel, continuing to put their lives on the line to try and find as many of the missing persons alive as possible. Remember, it's evening already, and that brings with it its own risks. It's still winter. It's very, very cold at these places. And therefore, with each passing hour, the likelihood of finding persons who are missing alive recedes. And therefore, there is hope against hope and a fight against nature's fury to find people as quickly as possible. Let's now bring you the 5 most devastating images that have captured the Chamoli disaster. Number 1, the image on your screen. This glacial burst occurred in the morning, actually, at about 10:40 in the morning in the Chamoli district of Uttarakhand in the lower Himalayas, where a part of the Nanda Devi Glacier broke off at Joshimath, causing absolute havoc downstream. You can see nature's fury play out in these videos captured by locals. The breach took place in the Dhauli Ganga valley. That's what you're looking at right now. The glacial breach created havoc in the Chamoli, Joshimath area, destroying everything in its path. This is some of the most dramatic footage that has been captured there. Try and listen in to some of this. This caused huge flooding in the Alaknanda and the Dhauli Ganga river tributaries, endangering the lives of people living along its banks. These are pictures of the river shortly in spate after the glacial breakage, breaking its banks in several parts of these areas. The Rishi Ganga power project has been completely damaged. As you can see in these pictures, the flash flood just smashes right through that, almost like it was made of plastic. The project has been completely damaged. More than 150 laborers working
at the Rishi Ganga power project have been directly affected. Most of them continue to be missing. Prayers are on. Rescue operations are currently underway. The dam of the Tapovan power project was breached and feared to have been washed away as well. ITBP and state disaster response forces, brave Jawans, fighting against nature to bring the affected back to safety. Hopefully there won't be more casualties, but they are definitely feared at this time. So now I want to break down for you precisely what happened. How did this actually happen from 10:40 this morning? A portion of the Nanda Devi Glacier in the rainy area of Chamoli district, beautiful part of the country, broke off at about 10:40, triggering this huge avalanche. So you had large chunks of glacier simply rolling down the mountainside into the river, triggering these flash floods in the Dhauli Ganga, which is a tributary. The Tapovan Hydel project was damaged in those initial moments amidst that flash flood water gushing down onto the Alaknanda river, which is also a tributary of the Ganga. The moments of the dam breach were clearly caught on camera. These are some of the first images that began to go viral that you must have seen. It is this moment after which the flash floods really turned violent. And this image on your screen is one of the most dramatic, causing widespread devastation in that particular area near the Hydel project. And there is a human settlement right around that project, as you can see, which has been washed away. The flash floods also damaged the Rishi Ganga hydroelectric power project, with reports suggesting that there's been heavy damage due to the breaking of the hydropower project, with, like I said, 150 personnel from the project believed to still be missing. Here's what the additional district magistrate of the Chamoli district had to say to India Today on the disaster just a short while ago. जो एवलांच आया था, ग्लेशियर टूटा था ऋषि गंगा के ऊपर, उसकी वजह से जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसका जो डैम था वो टूट गया। उसके बाद फिर नीचे अन्य चीजें टूट गई, उसकी वजह से काफी मात्रा पानी का वॉल्यूम बढ़ गया था और जिस कारण से काफी जान माल का नुकसान हुआ है। एग्जैक्ट तो अभी फिगर नहीं है, परंतु मानव क्षति और अन्य क्षति काफी ज्यादा है। नहीं, विलेज तो ज्यादा नहीं है, परंतु जो काम कर रहे थे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में वो मिसिंग है। रेस्क्यू हमारी टीम लगी हुई है, वो इसीलिए रेस्क्यू कर रही है। जो हमारी, क्योंकि उसके नीचे भी धौली गंगा में एक एनटीपीसी का भी पावर हाउस बन रहा है, तो उनके भी डैम साइड में कुछ नुकसान होने की सूचना है। Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat has been in touch with the centre. He is in the Chamoli district to review the rescue and relief operations in that particular area. Here's the very latest from the political leadership on what's happened in Chamoli district. उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गए, SDRF की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और
आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उत्तराखंड में हादसा हुआ है, ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुशल रहें, वहां पे किसी को हानि ना पहुंचे। हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं उत्तराखंड के लोगों को। जोशीमठ पे जो हादसा की खबरें अभी अभी आई हैं उसके लिए मैं अपनी संवेदना देता हूं। Being inundated. These images of ITBP personnel rescuing laborers there. These are one among the 10 who've been rescued just a short while ago. The 16 who were rescued, I beg your pardon, just a short while ago. These images are exclusive to India Today. They've been shared with us by the Indo-Tibetan Border Police. Look at this video once again. This audio, this imagery, the audio, the sound is absolutely inimitable. Please take a look at these pictures. You're looking at them only here on India Today. तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था NTPC का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री के ने एक निर्देश जारी किए हैं और यहाँ से भी निर्देश गए हैं कि जितने भी हमारे जनपद हैं जो गंगा के बेसिन में आते हैं, 27 जनपद, उनको एक अलर्ट जारी किया गया है। मंडलायुक्त और जनपदों से बात भी लगातार की जा रही है कि इस स्थिति पर मॉनिटरिंग रखें और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उत्तराखंड से उसके अनुसार हम अलर्ट पे हैं और वाटर जो हमारा लेवल है नदियों का उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा कंटीजेंसी प्लान हमारा तैयार है। Very quick break while I leave you with these pictures. Back right after that. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.